द टॉपिक इज़ एग्रेरियन डिस्ट्रेस. बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है एंड इसमें अगर हमें कुछ बेसिक्स पता हों तो इट्स quite helpful for us. So India's agrarian sector is under distress, as we all know, because low growth is there, then poor earnings of the farmers, and as we have seen, farmer suicides and all these are in news. Okay, though, like, what are the reasons for it? First of all, just we are jumping to the main part of the topic, that what are the reasons behind this agrarian distress, particularly in India we are talking about. So the first thing is unpredictable weather and low agricultural output. As we all know that Indian agriculture is basically monsoon dependent, and monsoon in itself is quite erratic, and we are having floods and droughts at the same time, and most of Indian agriculture is under rain-fed farming. Okay, so the unpredictability of the weather, and as a result of that, low agricultural output. Okay, so this is the core reason. Now all other reasons, they may be, I should say, secondary, but this is the core reason in Indian, in the context of Indian agriculture. Okay, second is excessively dependence on this MSP, minimum support price, and this minimum support price is basically responsible for the skewed cropping pattern in India, and as well as the inflation in the prices in market. See, I'm not going to the deep because the topic is agrarian distress, so I'm just sticking to it. Third is agricultural marketing not on pan India basis. Third is informal rural rendings. Rural rendings, or this credit facility to the farmers, is one of the core reasons behind this agrarian distress, and as a result of which, government is trying or coming with the idea or plan with doubling the farmers income by 2022. So obviously informal rural lending is one of the main factor. Cost of production is increasing in context of agriculture, be it fertilizers, be it inputs, fine, and degradation of soil thanks to the green revolution, and water resources are sinking. So there is degradation of soil because of the use of high yielding variety, which needs basically these chemical fertilizers, right? And as a result of that, degradation of soil is taking place, as well as our faulty irrigation practices. Definitely they are also a factor. They are also factor in this degradation of soil, and augmenting soil erosion, and water resources are shrinking down, which basically reduces the irrigation facilities. And unsustainable agricultural practices, you can relate it with this degradation of soil. The factors I have told, like high yielding variety of seeds, and then chemical fertilizers, and all these things, fine. Apart from this, inequality in land holdings. See, majority of the Indian farmers are small and marginal farmers, fine, majority, and they are having a small chunk of land holdings within their hand. But the minority farmers, they are having a large number of land holdings, and they're basically doing commercial farming. So there is a kind of inequality in this. Lack of proper storage facilities, definitely it adds to the agrarian distress, especially in context of this fruits and vegetables, fine, perishable commodities. And when there is a bumper, crops or surplus is there, then prices of agricultural products, they pushing farmers for distress sale. What it means is, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इट मीन्स जब बम्पर क्रॉप से सरप्लस होता है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, उनके पास में उतनी बार्गेनिंग पावर्स नहीं बचती हैं, एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो एक लोन वेविंग डिमांड्स जो है वो शुरू हो जाती हैं, एंड फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देती हैं. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस why there is agrarian distress in India. Fine. Now, अगर आंसर में या क्वेश्चन में कभी भी एग्रेरियन डिस्ट्रेस आता है तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट वी नीड टू मेंशन इट. फाइन. सो जल्दी से हम देख लेते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने क्या क्या बोला है. द फर्स्ट थिंग इज दैट
First thing is on working out a system for food and nutrition security, sustainability in farming system, etc. कि इंडिया को कुछ एक फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सिस्टम चॉक आउट करने की ज़रूरत है, सो दैट जो फार्मिंग सिस्टम है एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी और मतलब सस्टेनेबल करियर बन पाए. फाइन. रिगार्डिंग एमएसपी भी कुछ रिफॉर्म्स के लिए बोला है. एंड एश्योर्ड एक्सेस मिले फार्मर्स को टू लैंड, वाटर, क्रेडिट, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी इन मार्केट. एंड हाँ, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट्स थे. मेन पॉइंट ये है दैट दिस रिपोर्ट सेज और रिकमेंड्स दैट agriculture should be shifted from state to the concurrently, so that union can not only provide guidelines but can also frame laws for it. Fine. So this is the core point. एंड अब अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसको देख लें स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को, तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ये बोला है. एज वी नो दैट लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, इनफैक्ट not successful in India. Fine. So we can think of bringing out land reforms version 2, and with respect to that स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने ये बोला है कि जो डाइवर्जन होता है प्राइमरी जो एग्रीकल्चरल लैंड है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, वो रोकना है. एंड सेकेंड थिंग इज़ जो ग्रेजिंग राइट्स एंड सीजनल एक्सेस प्रोवाइड करनी है ट्राइबल्स को और पेस्टोरल्स को. फाइन. तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी विद रिगार्ड टू लैंड रिफॉर्म्स. विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन रिफॉर्म, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने बोला है दैट सस्टेन्ड एंड equitable access to water for irrigation and focus on rain water harvesting. इस चीज़ पे फोकस करना है. कहीं भी कभी भी इरिगेशन से रिलेटेड आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कोर टू राइट. इट नीड्स टू बी रिटन. फाइन. थर्ड थिंग इज प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ से रिलेटेड बोला है दैट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की नीड है, पर्टिकुलरली फॉर इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन, रिसर्च, वाटर कंजर्वेशन एंड रोड कनेक्टिविटी. बिकॉज एग्रीकल्चर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करना कि मार्केट तक मटेरियल पहुंच पाए, उसके लिए रोड कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है. एंड दी ऑल कम्स अंडर फॉरवर्ड लिंकेजेस. फाइन. विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स साइड, इसमें बोला गया है दैट कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में बोला गया है दैट अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करना होगा एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे. ठीक है. एंड कवरिंग ऑल क्रॉप्स बाय जो जितनी भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उन्हें सारी क्रॉप्स कवर करनी चाहिए. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो लाइक दीज आर व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशंस जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन, विद रिस्पेक्ट टू फार्मर सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स, और हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. If you need to write these in your answer, fine, in order to fetch more marks. Now, what are the challenges and concerns with respect to this, resolving this agrarian distress in India? The first thing, as I have told, that monsoon dependent nature of Indian agriculture. Fine, this is the core challenge. Second thing is post harvest losses जो इंडिया में होते हैं, मतलब 40 to 50% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंडिया में होते हैं. फाइन. एंड लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है एज वी ऑल नो, जिसमें कि लैंड जो है वो कम है बट उस पर जो डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयड है उस पर, वो ज़्यादा है. फाइन. सो एग्रीकल्चरल ग्रोथ खुद में कम है, साथ साथ में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है. Then inefficient APMCs हैं. APMCs Agricultural Produce Marketing Committees. इनका inefficient होना, and in fact ये बोला भी जाता है कि scrap कर दिया जाए APMCs को, या Model APMC Act 2003 इसको implement किया जाए, जो कि कई states लेकर भी नहीं आए हैं. That will go into the domain of APMC. I'm not going into that. And so because of this inefficient APMCs, we have monopoly of traders. Fine. And fiscal conservatism, public investment कम है. This is a challenge with respect to irrigation, with respect to flood control. See, agriculture is not only suffering from like
credit crunch or with this monsoon deficiency, but as well as with the disasters that the agriculture is facing because of the climate change. The severity of the weather is also impacting Indian agriculture. Fine. And yeah, this is liberalized imports. This is also infecting the nature of you know, इनफैक्ट जो इम्पोर्ट्स इंडिया में हैं वो कहीं ना कहीं जो क्रॉपिंग पैटर्न का नेचर है वो भी इफेक्ट कर रहा है. फाइन. डोमेस्टिक प्राइसेस इससे इफेक्ट होते हैं. एंड इनफॉर्मल लोन्स, क्रेडिट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कभी भी आता है तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लाइक मॉनसून, क्रेडिट and land holdings, public investment. These 3-4 things are very general that you need to write in your answers. So let's look at the solutions with respect to it. We have seen the challenges. Solutions, okay. See, agricultural insurance. फाइन. एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है. एंड जैसे कि हमने बोला कि इनएफिशिएंट APMCs हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं, सो रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को. एंड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस करना है सो दैट फार्मर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डायरेक्ट अपनी जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर पाएँ. फाइन. एंड दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन दी मंडीज फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस. सो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी रुक जाएगा. एंड जो रोल है मिडिल मैन का इन मंडीज में वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा. एंड वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. फाइन. ये हो गया. सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्केटिंग ओनली. एंड थर्ड इज लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है. एंड फोर्थ थिंग इज our agriculture should be ecologically sensitive, as we have seen with respect to 1970s green revolution ki because of the use of chemical fertilizers in excess. We have seen that the soil of Punjab and Haryana have basically become saline. Fine. It's quite unproductive now. So and because of the saline nature of soil, they have to use more and more chemical fertilizers in order to gain maximum productivity. So what is more important that in order to increase this agricultural produce, one factor should be kept in mind, that it should be ecologically sensitive. Fine. Environment is a key. I have told earlier also that in any topic or in any answer, environment and society, these two things are very important, which needs to be taken care of while writing any points. Fourth thing is management of surface and groundwater. Fine. And law giving right to owner to exploit underground water should be revised. बेसिकली एक लॉ है जिसके अंदर शायद ये टैंक्स भी बनाए गए हैं कि जिसके लैंड में वो अंडरग्राउंड वाटर का रिसोर्स होगा वो उसको यूज़ कर सकता है एंड उसको कितना भी क्वांटिटी में यूज़ कर सकता है. तो इस लॉ को डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिवाइज करने की ज़रूरत है. Apart from that, diversification of livelihood is really very important. And government procurement of millets and pulses and credit and crop insurance, ye points already I have covered. Fine. And this is very important, agro-processing industries. Agro-processing industries will definitely help to augment the farmers' income, as well as they provide an alternative employment opportunities to farmers as well. Fine. So agro-processing industries are definitely very important. And communication with farmers, and please bear my writing, communication with farmers and civil society in agricultural policy making. एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकिंग में फार्मर्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स और सिविल सोसाइटी, इनके व्यूज़ को लेना बहुत ज़रूरी है. तो ये भी आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो बिकॉज इट्स समवेयर कहीं ना कहीं गवर्नेंस से